हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 21 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी डी बिस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 21 कुछ इस तरीके से है। मिस्टर डिप्यूटी चेयरमैन, इसको हम लिखेंगे मिस्टर डिप्यूटी चेयरमैन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मिस्टर डिप्यूटी चेयरमैन। ओके फ्रेंड्स, कॉमा, we are discussing a very important bill. We are discussing a very important bill. Full stop. Next, when we are discussing this bill, when we are discussing this bill को एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से this bill, we should devote all our comma, we should devote all other devote all our attention on the economic effects, all our attention, ठीक है फ्रेंड, all our attention, हम all our attention को एक साथ भी लिख सकते हैं इस तरीके से, all our attention, ठीक है फ्रेंड्स। ये नेक्स्ट है, टू द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ दिस बिल, अटेंशन, ऑल ओवर अटेंशन ऑन द इकोनॉमिक, इस तरीके से या इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, नहीं फ्रेंड इस तरीके से नहीं, इकोनॉमिक एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। ये शॉर्टर वे है, आप कोशिश कीजिएगा इसी तरीके में लिखने की, ठीक है फ्रेंड्स। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ दिस बिल टू दिस कंट्री, एक साथ, फुल स्टॉप। द ओरिजिनल आइडिया ऑफ एन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, द ओरिजिनल आइडिया ऑफ एन इंडस्ट्रीज, चाहे इस तरीके से लिखिए इंडस्ट्रीज, चाहे आप इस तरीके से लिखिए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट was all right to a certain extent, act was all right, एक साथ, all right to a certain extent, full stop. But I am afraid the same cannot be said of, but I am afraid the same cannot be said of, cannot be said इसके साथ ही लिख लेंगे, said of this amending bill, of this amending bill एक साथ लिखेंगे, comma, which is giving too much, comma, which is giving too much इस तरीके से रीडेबल नहीं रहेगा, too much चाहे इस तरीके से बनाइए और too much इस तरीके से, too much power to the government, too much power एक इस तरीके से हम लिखते हैं और इस तरीके से power to the government इस तरीके से लिख लीजिए, to interfere in industry, full stop. I think that the economic experts चाहे पूरा लिख लीजिए एक्सपर्ट्स को, चाहे इस तरीके से experts, economic experts in know only two types of economic, know only two types of economy, either the nationalized industrial economy, either the nationalized
industrial economy, comma, or a capitalist economy with a big failure of administration. Big failure of administration, full stop. There is no halfway house, full stop. There is no, इकट्ठा लिखेंगे, there is no halfway house, halfway house, full stop. I find that this industry's development, I find that this industry's development and and regulation act is entering into a very difficult field, a very difficult field, full stop. It is almost almost an it is almost an uncharted, इसको हम लिखेंगे uncharted, see and we are understanding, see and we are understanding, sorry for understanding, undertaking a, we are undertaking regulation which, comma, instead of benefiting our economy, comma, may rather ruin, comma, may rather को लंबा खींचेंगे, may rather ruin it, full stop, paragraph change. नेक्स्ट चलेंगे फ्रेंड्स. In a capitalist economy, it is the rule of the survival. It is the rule of the survival of the fittest. Full stop. It is a quality and price structure. It is a quality and price structure that determines the success of any business. That determines the success of any business. Full stop. If the management is bad, comma, the business goes down, full stop. The shareholders हम बनाएंगे shareholders, ठीक है फ्रेंड्स. द shareholders, ये शॉर्टर वे है, कंप्लीट वे, शेयर होल्डर्स, ठीक है. जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से बनाइए. शेयर होल्डर कीप ए वॉच ऑन इट, फुल स्टॉप. इट अच्छे से बना देते हैं, ऑन इट, फुल स्टॉप. नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, फुल फ्रेज में लिखेंगे इसको, ऑन द अदर हैंड, कॉमा, ए नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री, ए nationalized industry, comma, in a planned economy, the government thinks of the total requirements of the country as to how many ऊपर बनाएंगे फिर इस तरीके से, how many industries, इस तरीके से, are required to produce any particular goods, and whether the industries are, comma, and whether the industries are spread out properly, spread out इकट्ठा लिख लेंगे, properly in the various parts,
various parts of the country having regard, various parts of the country having regard इकट्ठा लिख लेंगे, to the raw ऐसे लिखेंगे raw material, to the raw material easily available full stop. But in this bill we are not following either of the two economies full stop. We are imposing some sort of regulation on the industries as they exist at present full stop. Therefore I submit that this type of regulation that this इकट्ठा लिख लेंगे, type of regulation instead of saving our economy, comma, will surely go against नहीं कॉस्ट बन गया, अगेंस्ट हम लिखेंगे इस तरीके से, go against any kind of progress full stop, paragraph change. नेक्स्ट पैरा है, लास्ट पैरा जो है वो है we generally follow what is done in England. Next है thou after an interval of few years, comma, there was a similar industry, comma नहीं full stop, there was a similar industries development and regulation act in Britain and therefore we must एक साथ लिखेंगे, we must also have a similar law in our country को इकट्ठा लिखेंगे इस तरीके से, या आप सेपरेट भी लिख सकते हैं, in और our country सेपरेट भी लिख सकते हैं. If we look into their experience, इसके बाद full stop है फ्रेंड्स. If we look into their into को अच्छे से बनाएंगे, into their experience of the working of this act, comma, what do we find, question mark, out of को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, out of our four को अच्छे से बनाएंगे, out of our four development councils set up एक साथ लिख लेंगे, in Britain only one was successful, comma नीचे लिखेंगे only one was successful full stop close. So friends, ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज 21, जिसमें हमने समझने की कोशिश करी है इस एक्सरसाइजेस की आउटलाइंस को, डिफिकल्ट आउटलाइंस को किस तरीके से हमने इजी वे में करना है और शॉर्टर वे में करना है, वो हमने इसमें डिस्कस किया. आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.